Further, I invite Mr. Piyush Kumar Yadav to deliver his valuable insights, sir. Okay, good afternoon to all of you. Am I audible? So first of all, I would like to thank Principal Ma'am They will be and the inviting Rockford Physical questions. Science Department to come Okay, with us thank you. to organize this event. And I believe that this event was literally beneficial for you. Why? Because I have seen that actually that the number of students who are preparing for UPSC is increasing in the region. And I must tell you one thing, that when it comes to the UPSC preparation, initially the performance of the these schools are not very good. And in fact, जो अंदर से कोप है वो होती थी कि हमारे बच्चे इस बात को क्यों नहीं करते, करना चाहिए उनको. एंड सबसे ज्यादा कोप इस बात को लेकर होती थी कि जब बच्चे जो है बाहर से लाइक देवर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देवर फ्रॉम लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड, या डॉक्टर्स हैं, वो आते थे. दे हैड बीन सेलेक्टिंग पॉलिटिकल साइंस एज देयर ऑप्शनल पेपर, हिस्ट्री एज देयर ऑप्शनल पेपर, एंड दे वर गेटिंग सेलेक्टेड. सो दिस idea was always there in my mind ki why our students are not performing very good when they have studied that subject from 3 years, and in fact they have been getting the chance to get to study the subject from some of the best teachers. So ideally speaking, if they are studying these subjects like from best of the best teachers, in that case they should perform well. And I must tell you that for last 2 years the result is literally improving, and in fact if you have been following like UPSC result closely, in that case, you must have noticed one thing, gradually that number of students of Delhi University is increasing day by day. मुझे लगता है पिछले 2 सालों में जब आप टॉप 10 रैंक देखेंगे तो उसमें DU के बहुत सारे बच्चे हैं जो आ रहे हैं, अंदर से देख के बहुत खुशी होती है. तो जब सिनेरियो चेंज हो रहा है तो इस चेंज सिनेरियो में हम भी थोड़ा बहुत चाहते हैं कि हमारे इनपुट जाए, एंड दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ वी डिसाइडेड टू कम अप विद द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एंड टू गाइड आवर स्टूडेंट्स. The only thing which is lacking is the mentorship. हमारे बच्चों के साथ वो mentorship नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से they are getting misguided. And when it comes to this mentorship or the guidance, there's one area which is very important is about selecting the optional paper. एक optional paper को लेकर कितने myths हैं market में, and in fact like there are so many coaching material, coaching institutions, they are always misguiding this. ठीक है. अब suppose like I always used to say one thing, if you have been asking this question to a person who is teaching like in a geography or let's say any other subject. So what would be the best optional paper for it? Of course, the subject that we have been teaching. And of course, he'll say, "यार आप मेरा सब्जेक्ट ले लो, ये बहुत आसान है, 3 महीने में खत्म हो जाता है, 4 महीने में खत्म हो जाता है." But just think logically. This is the basic purpose of our this particular event. Just think logically. कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा है, ठीक है, and a person who is coming from outside and he or she is going to study the subject for just 6 months, how come that person can perform the test? So it's a very logical thing. And that's why while selecting your optional paper, what you are supposed to do, you should just okay fine. So आप खुद लॉजिकली सोच के देखिए कि जिसने आज इस सब्जेक्ट को आपने 3 साल पढ़ा है, उस सब्जेक्ट में कोई आपसे बेहतर कैसे जाए? That's a very logical thing, right? So of course the subject that you have studied for 3 years, you are going to perform the best in that subject. And that's why this confusion should not be there, because I have been meeting with so many students, and the students they have studied, like in fact I am meeting with my students, they have studied history in Gargi College, and when it comes to the selection of the optional paper, they are selecting sociology or let's say psychology. और क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि मार्केट में मिथ है कि जैसे सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो बहुत छोटा है, तो कहते 3 महीने में खत्म हो जाता है. I can bet on this कि कोई भी सिलेबस जो है ऑप्शन करते हैं. I have been the student of UPSC, I have written like the names, couple of names, so I know that आप कोई भी ऑप्शनल पेपर पढ़ते हैं उसका सिलेबस कभी भी जो है वो 3 महीने में खत्म नहीं हो सकता है. Any optional that you study is at least going to take 4 to 5 months. At least it's going to take 4 to 5 months, that I can bet on, right? So basically, when you select your optional paper, there are a couple of things that you should keep in mind. Just few suggestions. Okay. Of course, Dr. Piyush Survey has already given valuable insight on this, and most of the points he has covered beautifully. So I would like to add some basic things on this. Let me tell you, or let me make you understand the things with respect to the number. First of all, why your optional is very important. The optional is important for this reason, that if you are getting around 400 marks out of 1000 in general studies, that is considered to be a very good mark. अगर आप 1000 में से सिर्फ आपको 400, अगर 420 के करीब नंबर आ जाते हैं तो माना जाता है कि बहुत अच्छे मार्क्स है, एक्सेप्शनली गुड मार्क्स. But then can you think, out of 500 there is possibility that you can get 320, 325 also in the optional. Now you can just calculate the importance.
कि अगर आपने 4 पेपर प्रिपेयर किए जो 1000 मार्क्स के हैं, उसमें आप 400 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और उसको अच्छा मार्क्स माना जा रहा है, और जिस सब्जेक्ट में द सब्जेक्ट विच इज योर ऑप्शनल पेपर, यू आर डेडिकेटिंग ऑफ कोर्स लाइक मच टाइम टू दैट, वहाँ पे आपने आउट ऑफ 500 लाइक यू आर एबल टू स्कोर समवेयर अराउंड 300. In fact, it's possible to score more than 300 also. And in fact, there are so many students that are able to score more than 300. Every year I have seen in political science, even I have seen in history also, people are scoring more than 300. So what is the logic? So basically, when it comes to optional, undoubtedly it is very important, and you need to learn that how to make the balance between the general studies and the optional paper. अगर आप यूपीएससी के लिए बाकी सिंसियर हैं, तो आपको बैलेंस जो है आप समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, और उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से उस बैलेंस को जो है आपको बनाने की जरूरत है. Now, second, it comes to selecting the optional paper. So, of course, optional is important, and that's why you should select it very carefully. और जो हमने अपने इवेंट का थीम रखा है कि you should choose your option very rationally. Now, what is this rationalism while selecting this optional paper? Rationalism का सिंपल मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है, ठीक है, क्यों नहीं सबसे पहले आपको फोकस उस सब्जेक्ट में करना चाहिए जो आपने 3 साल पढ़ा है. आप किसी भी XYZ से जो अभी प्रिपरेशन करने के लिए आया है, then he or she changing their subject, like they, let's say somebody has studied any paper in their graduation, and now like he or she is going for the UPSC preparation, तो वो अगर CSIR या हिस्ट्री या और कोई भी सब्जेक्ट जो वो सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी कंडीशन हमेशा उनसे बेहतर होने वाली है. हाँ, डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर ओरिएंटेशन, बिकॉज व्हेन यू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन, द ओरिएंटेशन इज वेरी डिफरेंट, बट द कंटेंट रिमेन्स वेरी सिमिलर. देयर इज नो चेंज इन द कंटेंट. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम दूसरी वाली हिस्ट्री पढ़ते हैं या दूसरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वहां पे जाके हम दूसरी पॉलिटिकल साइंस या दूसरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसा नहीं. द सेम थिंग, right? You need to twist, you need to manipulate the information with respect to the demands of UPSC. That's it. तो इन्फॉर्मेशन है आपको, उस इन्फॉर्मेशन को आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की जरूरत है, थोड़ा इसको उसके ओरिएंटेशन को थोड़ा बदलने की जरूरत है. So that's why this, like I think at least the people those who have studied political science and history, like they should not be under any misconception that you should select any other option. So I think this is one suggestion that I'll be giving. The second thing, like I would like to discuss for something for the history optional also. There are several myths regarding this history optional. Like people, as I told you just now, कुछ लोग हिस्ट्री ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और उसके बाद जब ऑप्शनल सेलेक्ट करने की बात आती है तो दूसरा ऑप्शनल सेलेक्ट है. So that is also something that I have noticed very frequently. Look, there are certain myths such as syllabus is very vast, ठीक है, या फिर हिस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ा myth ये होता है कि बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट होता है ये. आपको लगता है कि वहां पे जाके यूपीएससी को आपको ये पूछते हैं कि ये सारे इवेंट की डेट एक लाइन में लिख दो, और अगर सारे इवेंट की डेट एक लाइन में लिखेंगे तो सीधा जो आपको 316 ऑप्शनल जीएस में खराबी परफॉर्मेंस हो तो चलेगा. ऐसा नहीं है, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. एज सर वाज सजेस्टिंग द सेम इज एप्लीकेबल टू CSIR also. UPSC optional is all about the concept, right? And in fact, I would like to give you some examples to prove how come the students those who have studied history in their graduation or masters, they are performing very good. Last year, like the topper was Shruti Sharma, I guess, okay, and she had scored 305 or 306 in the optional. This year there is a fellow called Abhinav. Like this fellow has also scored around 306 in the optional paper. And can you imagine he had scored somewhere around 178 in paper 2. 178 in paper 2, exceptionally good man. But let me tell you the background. Both of them had studied graduation, with history optional. Masters they have done with history. Now the point is that why those students are performing good, those who have studied history in their, in their academy. So of course those who have studied, and in fact let me tell you one more thing. अभिनव ने मास्टर्स जो है उसने JEE से किया था, और उसका स्पेशलाइजेशन क्या था? मॉडर्न इंडिया, ठीक है. मॉडर्न इंडिया स्पेशलाइजेशन था, इसका मतलब ही मस्ट बी वेरी गुड इन पेपर 2, एंड ऑफ कोर्स दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ ही स्कोर 178 in paper 2. So that I think equation is very clear. So that's why like you should not get trapped in these kind of things. जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आपको हो सकता है ओरिएंटेशन चेंज करना. जो सिलेबस की जो वास्टनेस को लेके वो है मिथ है कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है. ये सिलेबस अनडाउटेडली इफ यू सी द सिलेबस, तो अगर आप पेपर्स के पर्सपेक्टिव में देखिए बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है. ठीक है, वो एक बार देखने के बाद जाके बता जाता है इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है. बट मुझे लगता है कि आप एक बार अगर सिलेबस को थोड़ा ढंग से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी. वहाँ पे उन लोगों ने हर चीज लिख दी है जो आपको पढ़ना है. जैसे आप अगर बात करते हैं मौर्यन एम्पायर, तो ये भी लिख रहे हैं कि मॉडर्न एम्पायर को हम किन सोर्सेस से पढ़ते हैं. लगते आज तक आपका से पढ़ते हैं, हिंदी का पढ़ते हैं, ठीक है. तो एवरी डिटेल रिगार्डिंग दैट
particular the topic has been given. So that's why it is not a bigger syllabus. Of course, it does consume like around 5 to 6 months to cover, but then it is not having a vast syllabus. Rather, I'll say that again you need to understand the requirements of UPSC, and as per that you need to prepare the subject. That's the only thing I'll say. And of course, like demand in UPSC is slightly different. So ऐसा भी नहीं है कि exactly academic चीजों को हम वहाँ पे जाके रखेंगे. थोड़ा सा orientation जो है वो change करने की जरूरत है. And I don't think anything extra you need to do. So that's all about it. So I think we are done with it. So if you have any questions, right, specifically with our guests, so in that case you can ask the question, and you can do that. You just ask. Feel free to ask questions. Any doubt which is there regarding this process. So sir would be thank you.